Hello everyone, welcome to Bridgenile Capitals. So today is our ninth episode probably for this particular podcast, and what we will be doing is we will be understanding all the fundamentals of the stock analysis that we have started yesterday, right? This series of podcast has been done for the stock analysis, exactly, yes. So in the entire series what we will be doing is exactly proceeding with all the stock information and the fundamental details. We will be moving. Yesterday we have selected how to select an industry to choose a stock, right? Today we will be moving into the details of individual stocks and how to proceed with it. So in order to start that, I would like to let you know that you can choose any of your Chrome browsers, move on to Google. The screener I like is Phenology ticker, and you can choose your own screener whatever you want. There is multiple screeners, right? So आप बेसिकली क्या कर सकते हैं कि कोई भी स्क्रीनर चूज़ कर सकते हैं सर्च इंजन के लिए, वट एवर स्क्रीनर आपको पसंद है. नेक्स्ट थिंग इज़ व्हाट यू हैव टू सी इज़ बेसिकली आज हम लोग देखने वाले फंडामेंटल्स का डिटेल्स कैसे लिया जाता है. ठीक है, एक फंडामेंटल स्टॉक का एग्जैक्ट प्राइस वैल्यूएशन सब कुछ कैसे देख के उसको मेजर किया जाता है. सो बेसिक थिंग विल बी ऑब्जर्विंग राइट नाउ is for the company something called ITC. So ITC, here we have something, right? Let us see. NSE and BSE. Let me give you a short information on this thing. What is BSE? BSE means Bombay Stock Exchange. What is mean by that? अब उसके लिए थोड़ा बहुत समझते हैं. इंडिया का जो भी इंडेक्स है, इंडिया का इंडेक्स कभी भी बोला जाता है तो द ओनली थिंग दैट कम्स टू आवर माइंड दैट वी शुड नो इज कॉल्ड सेंसेक्स. ना, द सेंसेक्स थिंग इज कॉल्ड BSE. It is the oldest index of India, so it is called BSE. Now what does these things do? Company secondary shares market में छोड़ता है. ठीक है, तो प्राइमरी शेयर्स आर होल्ड बाय द वैल्यू इन्वेस्टर्स और द एंटरप्रेन्योर वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाता है. वो लोग जब शेयर बेच देता है मार्केट में, जैसे वो जो आप लोगों ने देखा होगा शार्क टैंक्स वगैरह, हाँ वहाँ पर जो शेयर बिकता है दैट इज़ प्राइमरी शेयर. वो लोग जब शेयर जाके मार्केट में बेच देता है उनको बोला जाता है सेकेंडरी शेयर. एम आई क्लियर अबाउट इट? तो वो शेयर जब एक कस्टमर से दूसरा कस्टमर तक एक्सचेंज होता है ना, नाम शेयर इज रिमेनिंग द सेम बट द ओनली थिंग इज इट इज़ एक्सचेंजिंग इट्स नेम. तो इसको इसलिए बोला जाता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. मतलब ये एक्सचेंज है जहाँ पर नाम एक्सचेंज कर दिया जा रहा है बस. इफ़ यू बाई सम शेयर्स ऑफ सम पर्टिकुलर कंपनी, समवन एल्स इज सेलिंग इट, कोई भी उसे बेच रहा है तो वहीं से आप खरीद रहे हो. वंस यू आर बाइंग दैट पर्टिकुलर शेयर योर नेम इज गेटिंग एक्सचेंज. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, राइट? And we have two new exchange. If you have heard about the story of Harshad Mehta scam 1992, after that scam we have a new exchange in India, something called the NSE, National Stock Exchange. So in India basically we have two exchanges. India में दो exchange है जहाँ पर से आप स्टॉक खरीद बेचाई कर सकते हो. अब आप दूसरा प्रश्न ये पूछ सकते हो कि दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है. अब डिफरेंस ये है दोनों में कि फ्रॉम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज व्हाट यू कैन डू इज there are approximately 5,500 companies to choose from कि कहाँ से खरीदना है कहाँ से बेचना है. and NSE there are almost 1,500 to 2,000 top companies जहाँ से आप differentiate कर पाओगे. so because क्यों ऐसा? because NSE is particularly new. It has started from 1992 after Harshad Mehta scam, whereas BSE is starting approximately more than that 30 years ago before NSE, right? So we have understood what is the difference between NSE and BSE. Am I clear about it? So last podcast we have observed the difference in ITC. So what is ITC? ITC why? Because हम लोगों ने देखा था कि अगर कल कुछ भी हो जाए, कल मार्केट रिसेशन में आ जाए या फिर कोई भी लेवल का बैंक्रप्सी आ जाए, आदमी लोग या फिर कोई भी आदमी एक चीज़ करना नहीं छोड़ेगा, वो है कि खाना पीना खाना. So everyone will take food. So food industry, everyone will smoke cigarettes. Every kid nowadays, or every student, or every sectors, or every person, they whether they have cancer or not, they will start smoking. That is the nature of human. Whatever it is. So this is how it moves in. So ITC is a company that we were looking at. So ITC company, what are the things that are fundamentals? Now see, it is written today's high. इसका मतलब क्या होता है? आज पूरे दिन में स्टॉक मार्केट में the share price of ITC has touched 427.25 rupees at its maximum. Today's low मतलब आज पूरे दिन में today's पूरे दिन में the share price of ITC has touched a low of 421.10. 52 week high. 52 week मतलब 1 year. एक साल में ITC हाईएस्ट कितना गया है लास्ट 1 year में? if we calculate it has gone 499.70 and 52 week low कितना गया है 399.35, right? So
इसके अंदर में फ्लक्चुएट कर रहा है. दैट इज द मूवमेंट ऑफ ITC. Am I clear about it? Next, we'll be coming on to the company essentials. What is the difference between company enterprise and company market cap? कंपनी मार्केट कैप मतलब कंपनी का साइज होता है, कितना बड़ा साइज है मार्केट में, कितना बड़ा इज्जत है कंपनी का, राइट. अब वो कंपनी की इज्जत तो बहुत सारा डिफरेंस करता है. मतलब जैसे देयर इंटेंजिबल एसेट्स. इंटेंजिबल एसेट्स मतलब कौन सा एसेट्स? एसेट्स विच बेसिकली एसेट्स फॉर द कंपनी बट एक्चुअली दे कैन नॉट बी सोल्ड आउट टू गेट एनी मनी. मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, सपोज अमिताभ बच्चन कोई भी ऐड कर रहा है नवरत्न तेल का. सो नवरत्न तेल का जो भी ऐड है, अगर अमिताभ बच्चन सिर्फ नवरत्न तेल के लिए चलेगा ना, इट इज़ एन एसेट वर्किंग फॉर द कंपनी. डज क्या, बट माई क्वेश्चन इज, नवरत्न तेल वो अपना अमिताभ बच्चन ऐड को बेच सकता है क्या किसी और कंपनी को? नो. दे हैव इन्वेस्टेड अ लॉट विथ अमिताभ बच्चन बट they cannot sell it to any other person. Those kind of assets are called intangible assets. So now first we think we have is market cap. So market cap मतलब intangible assets को लेके market cap बनता है. Next thing is the enterprise value. मतलब एक कंपनी कुछ भी बेच दे, सब कुछ बेच दे अपना intangible assets छोड़ के, the exact value that comes is 5,27,523 crores. That is the exact position of enterprise value. That is the meaning of enterprise value. सो मार्केट कैप मतलब इन्फ्लेटेड वैल्यूएशन, टोटल वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी. एंटरप्राइज वैल्यू हमेशा कम रहता है एज कम्पेयर टू द मार्केट कैप. एम आई क्लियर अबाउट इट? नेक्स्ट इज नंबर ऑफ शेयर्स. मतलब आउटस्टैंडिंग में कितना सारा शेयर्स है और आप कितना सारा शेयर्स मार्केट मतलब NSE वगैरह या फिर रिटेल्स वगैरह इंस्टीट्यूशंस के वगैरह के पास कितना सारा शेयर्स है, जहाँ पर कि वो वाला शेयर्स सब कुछ रखा हुआ है एंड दे आर बाइंग मोर शेयर्स. और ये शेयर्स का मात्रा जब भी कम हो जाता है, कंपनी गिव्स बोनसेस ऑफ शेयर्स, दे स्प्लिट शेयर्स. The moment they split shares, this is what it happens. Am I clear about it? Next, what we are moving on is we will be discussing PE, PB, face value later on these videos. आज हम लोग बस basics topic के ऊपर बात करेंगे, ठीक है? The topics that you already know, basically. So because we have to move step by step. We cannot move directly कि directly यहाँ पर चले गए बस, and that is not possible, right? We have to move step by step. So next comes the debt. I'll talk about debt. Debt मतलब एक कंपनी के पास उधारी. Now debt, what we think is it is taken loan from the bank, yes, right, but it can be also in the form of bonds as well, right? Debt bond में भी हो सकता है. Bonds मतलब convertible bonds and non-convertible bonds, both case में हो सकता है. What are those? We will try to understand in next videos. Next, the thing is cash. अब कोई स्क्रीनर में कैश बोला जाता है, कोई स्क्रीनर में लिक्विडिटी बोला जाता है इसको. That means कि कंपनी को पास एग्जैक्टली कैश कितना है. मीन्स कंपनी हैज़ अ बॉन्ड ऑफ 4.54 CR और कैश है 3,831 CR. वी कैन इजीली सी कि अगर कंपनी कोई भी क्राइसिस में जा रहा है तो वो अपना उधारी चुकता कर सकता है या नहीं, एनी टाइम. यस, इट कैन जस्ट क्लियर एनी टाइम बिकॉज उसके पास कैश ही इतना ज़्यादा है, राइट? नॉट एवरी कंपनी कैन बट दिस कंपनी कैन. ठीक है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ फैक्टर आई एम गिविंग टू यू. आई एम नॉट गिविंग अ स्टॉक रिकमेंडेशन फॉर ITC, बट अगेन दिस इज जस्ट द फैक्टर आई एम टेलिंग यू. नेक्स्ट इज कि सेल्स ग्रोथ. These are the factor that changes. That is why I am not telling. PE ratio, PB ratio, we will be discussing later on. Because this factor changes consistently. But the factor that doesn't changes consistently is cash and debt. Okay. Next we'll be moving on to the products. So these are the exact products the company sells, which you can see, right? Starting from every single thing. And next, what we see is debt to equity ratio of the company. What is the meaning of debt to equity ratio? This is very, very important. You are investing in any company means you are buying the shares of the company. Am I clear? आप कोई भी कंपनी का शेयर खरीद रहे हो मतलब कंपनी आपको शेयर दे रहा है एंड उसके बिहाफ पे आप कंपनी को पैसा दे रहे हो. आप कोई भी कंपनी से एक्सपेक्ट करोगे कि आपका पैसा चलाए, ना कि वो उधार से बैंक से लिया हुआ लोन चलाए, क्योंकि आपका पैसा जितना चलाएगा आपको रिटर्न भी उतना मिलेगा. एम आई क्लियर अबाउट इट? सो व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द बैंक और द कंपनी इज टू यूज योर मनी, not bank's money or bonds money. So debt to equity ratio मतलब debt मतलब loan suppose 1 rupees है और equity मतलब 10 rupees है, the ratio will always be 0. So if the debt to equity ratio of any company is less than 1, it's very good company, fundamentally very, very good. वैसा company generally मिलता है नहीं. If there is any, you have to look at those particular aspects. Okay. Now we will be moving on to next particular thing. The important sector that will be moving on is this particular thing. Okay, let me just check. We'll be moving on to next screener. We are fundamentally like yesterday we have searched about ITC, right? We'll be moving on to the fundamentals.
As we can see, yesterday we have discussed something about total revenue. रेवेन्यू मतलब कल हम लोग सीखा था कि रेवेन्यू मतलब एग्जैक्टली कितना माल बेचा है. तो 2016 से 2024 तक कंपनी हैज़ generated good sales amount. You can check the percentage. Am I clear about it? Next, the company का इनकम कितना हो रहा है. इनकम मतलब कोई भी सामान कोई बेच तो देगा, बट द थिंग इज उसके पास इनकम कितना आ रहा है, क्योंकि एक्सपेंस वगैरह काट के उसके पास इनकम आता है. नॉट द प्रॉफिट बट द इनकम कितना आ रहा है. Am I clear about it? Because the company अब कुछ भी चीज बेचेगा ऐसे तो नहीं बेचेगा ना. द कंपनी विल बी सेलिंग इट फॉर सर्टन प्रॉफिट्स. अब उसके पास प्रॉफिट ही नहीं रहा तो वो बेचेगा ही क्यों. सेम केस. नेक्स्ट इज द ईपीएस. ईपीएस मीन्स अर्निंग्स पर शेयर. मतलब एक शेयर के ऊपर कंपनी कितना रुपए कमा रहा है. जितना रुपए कमा रहा है उसी के ऊपर डिपेंड करके वो मुझे डिविडेंड देता है. सो इफ आई एम लुकिंग फॉर अ डिविडेंड पेइंग स्टॉक, डिविडेंड मतलब एवरी क्वार्टर, देयर आर 4 क्वार्टर्स, एवरी 3 मंथ बिलोंग्स टू 1 क्वार्टर. जैसे मार्च अप्रैल मई, राइट, देर इज अ पर्टिकुलर क्वार्टर. तो मार्च से एक क्वार्टर शुरू हो गया मई, तो जून में जाके वो क्वार्टर, अगेन नेक्स्ट क्वार्टर स्टार्ट्स फ्रॉम जून, जुलाई, अगस्त. अगेन नेक्स्ट क्वार्टर स्टार्ट्स फ्रॉम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर. सो दिस आर द क्वार्टर दैट स्टार्ट्स ऑन अगेन एंड अगेन, राइट. सो ये क्वार्टर होता है जो कंटिन्यूसली स्टार्ट होते रहता है. सो एवरी क्वार्टर कंपनी विल गिव यू देयर रिपोर्ट्स कि वो कंपनी क्या काम कर रहा है. सो यू एज एन इन्वेस्टर हैव टू ऑब्जर्व कि एग्जैक्टली वो कंपनी ये फील्ड में आके काम क्या कर रहा है. Every quarter, you as an investor have to detect whether the company is undervalued or overvalued. So reading is very important in this field. And again I'm telling, if you haven't listened to my previous podcasts, please go there and listen. If you're directly coming into this particular video, you might not understand everything, concepts वगैरह सब कुछ, right? If you have gone through my previous podcast, you will definitely understand every single thing. Am I clear about it? So इसके बाद हम लोग जो ट्राई करेंगे वो है कि अर्निंग पर शेयर. अर्निंग पर शेयर मतलब इंडिविजुअल क्वार्टर टू क्वार्टर में एग्जैक्टली कितना कमा के दे रहा है. एक शेयर कितना कमा रहा है, एक शेयर जितना कमा रहा है उसके ऊपर जो भी पैसा मैं डाल रहा हूँ, इज इट वर्थ इट. सो यू एज ए इन्वेस्टर हैव टू थिंक अबाउट इट. एम आई क्लियर अबाउट इट? यस. नॉट दोज ये जो लोअर देन इंडस्ट्री डेट टू इक्विटी, हायर देन इंडस्ट्री डेट टू इक्विटी. डोंट फोकस ऑन दिस थिंग. यू शुड हैव योर ओन एनालिसिस, नॉट इन स्क्रीन एनालिसिस. कोई भी स्क्रीनर आके कुछ भी बोल देगा, कोई भी ऐप आके कुछ भी बोल देगा. यू कैन नॉट बाय ऑन दैट पर्टिकुलर फैक्टर. एम आई क्लियर? You as an investor have to do thorough research, the history of the company. Unless and until you have a thorough research, you cannot buy. You should not buy. No, I will not say you cannot buy. You should not buy. So the thing is current assets. अब current assets मतलब assets जिसको बेच बाच के इसी साल. Current और non-current assets, those who are from commerce background, they understand that clearly. That current asset मतलब वही asset को बोला जाता है जो बेच के इसी साल पैसा मिल जाएगा, उसको current asset बोला जाता है. These are not long-term assets. नॉन करेंट एसेट मतलब एक साल के अंदर नहीं लिक्विडेट किया जाएगा, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए. कोई भी कंपनी सपोज आईटीसी किसी और कंपनी का शेयर खरीद लेता है लॉन्ग टर्म के लिए, सो वो एसेट तो हो गया बट इट इज़ फॉर द लॉन्ग टर्म. आई एम क्लियर अबाउट इट? नाउ अंडर दोज करेंट एसेट एंड नॉन करेंट एसेट्स दे आर टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स. ठीक है. सो ये सब होता है. सिमिलरली थिंग्स अबाउट लाइबिलिटी एंड नॉन करेंट लाइबिलिटीज. सो डिफरेंस क्या है? करंट लाइबिलिटी आर सेम थिंग. करंट लाइबिलिटी मीन्स इस साल का लाइबिलिटी, 2024-25 का लाइबिलिटी. नॉन करंट लाइबिलिटी मतलब आफ्टर 2024-25 का लाइबिलिटीज. नाउ इफ यू अंडरस्टैंड, यू हैव टू थिंक इट दिस वे. टू अंडरस्टैंड एनी पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर कंपनी, व्हाट यू हैव टू थिंक इज लाइबिलिटी और एसेट यू हैव टू डिस्क्राइब बाय योर ओन बैलेंस शीट. कंपनी तो देगा ही, बट दैट बैलेंस शीट मे और मे नॉट बी द एक्चुअल फैक्ट. सी, कंपनी विल गिव यू द बेस्ट लुक एंड द ब्राइटेस्ट लुक कि दिखाने के लिए कि भाई मेरा ही कंपनी बेटर है, बट यू एज एन इन्वेस्टर हैव टू आइडेंटिफाई वेदर द कंपनी इज गुड और नॉट. एम आई क्लियर? यस. सो एवरी सिंगल थिंग काउंट्स आउट देयर. सो अगेन यू हैव टू ऑब्जर्व दैट टोटल लाइबिलिटी घट रहा है या फिर बढ़ रहा है. सो द ओनली थिंग दैट यू बेसिकली अंडरस्टैंड इज कि टोटल एसेट्स जो भी है, वट एवर इट इज, वेदर द टोटल एसेट्स आर इंक्रीजिंग ओवर द टर्म एंड टोटल लाइबिलिटीज आर डिक्रीजिंग ओवर द टर्म. एंड इफ द टोटल एसेट्स आर इंक्रीजिंग ओवर द टर्म, इट्स डेफिनेटली गुड. And if the total liabilities are decreasing over the time, that is too definitely good. You have to observe all those factors. अगर investing उतना ही आसान हो जाता तो हर कोई कर लेता. That is not possible by every single person. Am I clear? So to do investing, it takes lot of patience. It takes lot of reading. It takes lot of thinking. The much more amount of thinking you do, the better you become in investing. You have to observe, not focus on any company you invest in. Just focus on that particular company for at least 5 years. If you don't want to hold the company for 5 years, don't buy it for 10 minutes as well. Sir Warren Buffett just told the same thing as I said, right? So
next class what we will be doing is we will be studying the details of the company. Details means PE, what is P ratio, what is PB ratio, right? What is the type of income a company generates, कौन सा इनकम इन्वेस्टर के पास जाता है, कौन सा इनकम शेयर होल्डर के पास जाता है. वी आर विल बी डिस्कसिंग ऑल दोज इन डिटेल्स. Am I clear about it? Yes, and we will be reading, we will be learning how to read an annual report presentation. So if you want to continue through this particular series, it is very, very good. And if you don't want to continue, still it's very, very good. I don't have any particular issue. So my duty is to cover up all those 14 video podcast series for the value investor. This is how you become a value investor. This is how I became a value investor. I am sharing you the path. Now it depends upon you whether you want to follow or not. If you want to follow, it's very well and good, right? We will be discussing all these details in next class. Thank you.